the introductory course that I will be taking you through, one hour session. It will also have 7 days activities in the end, so that whatever we are going to talk about today, for 7 days, we all will practice it. Right. And those are going to be very small gestures. You will understand, like, what happiness actually is. So I wanted to thank you for having me here, so that whatever I have understood about happiness, I can share it with you, because it has helped me a lot, and I feel it is very important for everybody to understand it as well. Right. And especially all the young boys and girls who are going to be here, उनके लिए बहुत important है ये समझना, because पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं. सो आई थिंक ये जो 1 घंटा हम लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, वो शायद कहीं ना एक होता ना स्विच ऑन करता है, लाइट शायद जलेगी कि हाउ टू लीड और हाउ टू सी द पर्सपेक्टिव of like whatever is happening in our life, like even right now also. So इसी के साथ I'll just share my PPT, sir, if we can start. Yes, मैं ma'am. उसके लिए मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा उसमें मैडम. Please, मैं yes. स्टूडेंट्स ने जो स्टडी है वो सीरियसली लेने के बजाय अगर लाइटली लेते हैं तो दे कैन अचीव much better than what exactly they are expecting. So for Yes. that they must have to set us some goals in that one. Yes, I think perfect. a number of students are there, they might be listening. So Yeah. for them, my request is that take the study lightly. Don't take it as very seriously. Yeah, I would say that whatever you are doing, just enjoy. Yeah. Just enjoy. अगर नहीं समझ में आता तो प्रोफेसर का सिर खाओ कि मुझे समझाओ. Yeah. मुझे नहीं समझ में आ रहा, you teach me. So this is very important. कई बार तो हम लोग पूछना ही छोड़ देते हैं कि दूसरे क्या समझेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, तो उस डर से हम लोग शायद नहीं पूछते हैं. But yeah, it's all like it's this is the golden time of the life. Enjoy it, irrespective of what the result is going to be. But yeah, that's what it is. Okay. Great, sir. Ma'am, before you share your PPT, Yes. let Simran introduce you with a few words. Yes, Okay. Simran. Hi, Simran. Simran. Hello, ma'am. Yes. Thank Hi. you for your introductory speech. I find immense pleasure in introducing our honorable chief guest, Dr. Shrivastava, ma'am, from Guregaon, Haryana. Ma'am is a proud mother of two, working professional with over a decade experience in marketing, focusing in FMCD, luxury retail, travel retail, and apparel industry. She is practicing as happiness and positive mindset coach for 4 years. Welcome, ma'am. We are eagerly waiting for your guidance in this field. Thank you, Simran. Those were lovely. Thank you very much. Wait, I'll just share my PPT, ma'am. Yes, ma'am. I'm sharing my entire screen, so give me 2 minutes. Can you see this? Yes, ma'am. It's loading. Yeah. Okay. Yeah, it's visible, ma'am. Yeah, okay. So we have done the introduction. So thank you, Simran, for introducing me. It feels really, really nice, and it gives you a perspective of what you have been doing. So thank you very much for recapping it for me. So let's discuss. I wanted this session for everyone. सारे students ना इसको एक बहुत ही light discussion की तरह हम लोग लेंगे. तो आई जस्ट वांटेड टू नो, एक छोटा सा 1 या 2 लोग मुझे आके बता दें कि व्हाट इज इट दैट दे आर लुकिंग फॉर इन दिस सेशन. उनको वो क्या सोच के आए हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए. जस्ट one or two कैन आंसर. Yes, anyone. Anyone, please, yes. कोई भी, और there is no right or wrong answer. We are sharing. So Yes, this ma'am. is a sharing. प्लीज यस. आपको इस सेशन में क्या लेके आया, क्या सोच के आए हो किया ना, आज कुछ तो ऐसा सा मिलना चाहिए. Madam, my one request to the students, make it Yes. this session as interactive session. Yeah. That will be helpful to the students as well as means you can guide me much better with that if it is interactive one.
Yeah. Swapnil, yes, yes, you can go ahead. Swapnil, Is it okay if I keep my video off? louder, louder. हाँ You're हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके if nobody is interested in turning the video on, doesn't matter. All I want is that we don't wanted to see if you're okay not to show, perfectly fine. आप बस बात करो. आप बताओ कि अभी आपको क्या लेकर आया यहाँ पे. yes, yes. Anyone can answer. Nobody. मैम हेलो हेलो मैम Hi. Hi Azhar. हेलो हाँ गुड इवनिंग मैम Good evening. मैम मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जी बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया है ये जो हैप्पीनेस है वर्ड ये हैप्पीनेस मुझे यहाँ लेकर आया है That's perfect. Perfect answer. Very spot on. Simple and spot on. Thank you. कोई और एक और बंदा एक और प्रीति do you wanted to answer? Do you wanted to share? Hi. Do you wanted to share why you have what brought you here? Yes. Anyone? Simran, Mansi, Anchal. Simran? यह टॉपिक अच्छा लगा. कुछ भी बोलो जो भी लगता है वो बोलो. Ma'am, I like this topic. That's why I came here to join this webinar. Perfect. So this means in crust we all understand that happiness है तो कुछ अच्छा ही होगा है ना. So that is amazing because एक और क्वेश्चन जो आता है हमारे दिमाग में वो आता है कि क्या हमें do we really want to be happy? क्या हमें सच्ची मुच्ची में खुशी चाहिए? बिकॉज ना हैप्पीनेस जो है ना वो एक कॉस्ट के साथ आती है. इसको एक समझते हैं हम एक व्हाट यू कॉल इट एक एग्जांपल के साथ. ठीक है. अब होता क्या है कि आप लेट मी जस्ट सी वन सेकेंड. या इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. अब देख सोचिए कि आप ना एक बहुत अच्छा रन करके एक आपकी मॉर्निंग का रन आपने किया है और बहुत नाइस आपने 45 मिनट्स का कंटिन्यूस रन करके आप बस एक बेंच पे पार्क में बैठे हो. अब आप जब बैठे हो ना तो बहुत अच्छा मौसम है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, पेड़ पौधे बहुत साफ सुथरे से लग रहे हैं, मे बी शायद सुबह बारिश होकर हटी है. एंड सडनली आपका ना एक ध्यान जाता है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे. वहां पे एक बहुत प्यारा सा बच्चा खुद से अपने आप खेल रहा है और थोड़ा थोड़ा टाइम में आपके साथ उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट होता है. वो अपने अपने मिट्टी के साथ घास के साथ कुछ 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 करे जा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं. तो उसको देख के आप बहुत खुश होते हो. वहीं पर ही आपके ना राइट हैंड साइड पे एक और बच्चा है जो थोड़ा सा घबराया हुआ है, रो रहा है और उसको शायद समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा घबराया हुआ है एंड ही इज क्राइंग ऑल्सो. तो आप वहां पे अगर सब सोचिए कि उस पूरे पार्क में आप ही एक ऐसे एडल्ट हैं वहां पे और कोई आसपास नहीं दिख रहा, आप किसके पास जाएंगे? क्या आप वो मुस्कुराते हुए बच्चे के पास जाएंगे या वो जो बच्चा रो रहा है उसके पास जाएंगे? Yes. जो बच्चा रो रहा है उसके पास जाएंगे. एनीबडी एल्स? जो रो रहा है उसके पास जाएंगे. ठीक है. एंड वैभव भी हम लोगों ने रोते हुए बच्चे के पास जाने का क्यों सोचा? मैम बिकॉज उसको हैप्पी करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. हाँ, क्योंकि वो रो रहा है ना, मे बी शायद उसको किसी चीज की जरूरत हो, है ना. शायद हम लोग जाएंगे तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं सेफ फील करेगा, तो इसलिए हम लोग दूसरे वाले के पास गए. करेक्ट. अब मैं यहीं पर ही आपको ना दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ. आपके पास ना एक असाइनमेंट आया कॉलेज का आपको वो बहुत जल्दी खत्म करना है और आपके पास टाइम नहीं है. तो आपके पास ना अब दो ऑप्शंस हैं. एक आपका ऐसा दोस्त है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और इजीली अप्रोचेबल है, तो आप या तो उससे पूछोगे काम करने के लिए, या दूसरा एक आपके पास दोस्त है जो बहुत ही थोड़ा ना खड़ूस टाइप है, मतलब कि उससे बात करो तो वो चार चीजें और सुनाता है
और मतलब उसकी सारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी बोलेगा मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम है, टाइम नहीं है, बट ना ही कैन डू अ वेरी गुड जॉब एज वेल। एट द सेम टाइम ये जो खुश दिल दोस्त है आपका, वो भी बहुत अच्छा आपका जो असाइनमेंट है उसके अंदर हेल्प कर सकता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको सुबह असाइनमेंट सबमिट करना है और वो एक सेक्शन जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 घंटे लगेंगे। आप इस मदद के लिए किसके पास जाओगे? एक अपने खुशदिल वाले दोस्त के पास या फिर वो जो एकदम सड़ू है उसके पास? किससे मदद मांगोगे? खुश दिल वाले फ्रेंड के पास। खुशदिल वाले के पास, है ना? और ऐसा क्यों? बताओ वैभवी। क्योंकि टुडेज हाँ, टॉपिक इज क्योंकि वो कुछ भी हैप्पीनेस। बोलेगा नहीं अपने को, हाँ, आप एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी हम बोलेंगे, तो एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ मैं कर है ना? दूंगा। वेरी गुड। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे हम लोग दोनों सिनेरियोस में बात करते हैं। पहले वाले सिनेरियो में जो जहाँ पे छोटा बच्चा था, वहां पे अटेंशन किसको मिली? खुश बच्चे को अटेंशन मिली या रोते हुए बच्चे को अटेंशन मिली? रोते हुए। किस बच्चे? रोते हुए बच्चे को। और दूसरे सिनेरियो में काम ज्यादा किसको मिला? खुश दोस्त को या फिर रोता हुआ दोस्त को? रोते हुए दोस्त को। खुश वाले दोस्त को दिया ना आपने ज्यादा काम। रुपेश, जिसको असाइनमेंट के लिए हेल्प मांगना था आपने, तो वो हेल्प मांगा आपने खुश वाले दोस्त के पास। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो में क्या है, जो बच्चा रोया उसको अटेंशन मिली, जो बच्चा आपका दोस्त जो है वो खुश है उसको ज्यादा काम मिला कि भाई छोड़ना, आपने जहाँ पार्टी वार्टी पे जाना तो छोड़ना, 2 मिनट मेरी हेल्प कर देना। आपको पता है वो मना नहीं करेगा, तो इसीलिए आपने उसी को चुना, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो 100 चीजें सुनाएगा एंड देन लाइक देयर वुड बी लाइक अ लिटिल बर्डन कि यार छोड़ना, क्या इसके पास जाना है, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है, तो यहीं पर ही ना होता क्या है कि हम लोग ना हम लोग के अंदर जो एक जो हैप्पीनेस का एक क्वोशंट आता है ना, वो होता है कि हम एक सेइंग है या फिर एक वर्ड है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं दैट ना वी आर अननोइंगली रेजिस्टेंट टू हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि हम ना कुछ भी करके ना अपनी अपनी खुशी को ना संभालते हैं, कहीं ना कहीं पे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, शायद दिखाते नहीं है, वो एक एक रहता है अपने पे। वाई? बिकॉज अगर आप यही चीज को थोड़ा और समझें, जब जब एक माँ के पास 2 बच्चे हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 1-2 साल वाले, वो वाले, जब बच्चा रोता है ना तभी माँ को होता है कि चलिए यार इसको खाना खिलाना है या तो दूध पिलाना है। जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी नहीं जाएगी उसके पास कि यार खेल रहा ना, थोड़ी देर और खेल ले, मैं थोड़े और काम कर लेती हूँ। सो दैट इज देयर। यस संजना। संजना, यू रेज योर हैंड, यू हैव अ क्वेश्चन? नो, ठीक है। सो होता क्या है कि हम लोग ना हमारे में ये एक इनेट नेचर है टू हेल्प ईच अदर, टू हेल्प समवन हु इज नॉट नॉट लुकिंग हैप्पी, टू हेल्प आवर क्लोज वंस, जहाँ पे या तो कोई इंसान रो रहा है या ऐसा लग रहा है कुछ ट्रबल्ड है, हम लोग ना जाके उसको हेल्प करते हैं। तो ये तो हमारा है। अब इसी में ही अगर मैं एक और आपको क्वेश्चन पूछूं, अगर आप घर पर हो और समझिए कि आप एक ऐसे इंसान हो जो खुशदिल इंसान है, इज देयर एनी कॉस्ट दैट वी माइट पे व्हेन वी आर हैप्पी एट होम? मतलब कि एकदम अप्रोचेबल है, कोई भी हमसे कोई भी काम वाम बता सकता है, घर पे बैठे हुए हैं, तो इज देयर एनी कॉस्ट दैट वी मे पे, माइट पे, कि अच्छा बच्चा, खुश दिल बच्चा बैठा है वो यहाँ पे, तो उसके लिए क्या वो कॉस्ट हो सकती है घर पे? एनी आंसर्स? एक हिंट दूं, एक कभी कभार होता है ना, मम्मी बोल देती हैं 3-4, अगर 2-3 भाई बहन है, उसमें से जो जो एक गुड बॉय या गुड गर्ल है उसको ना घर के बाहर के काम ज्यादा दे दिए जाते हैं कि जा जाके थोड़ा सा ना धनिया पत्ती ले आ, या जा जाके थोड़ा सा ब्रेड बटर ले आ। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नॉर्मली आस्क someone who is always like smiling, या someone who is always happy। हैप्पीनेस में जो हैप्पी बच्चा होता है उसको ज्यादा काम मिलता है।
यहीं पर ही अगर आप ऑफिस में होते हो या फिर काम पे होते हो, तो जो खुशदिल इंसान होता है ना, उसको पता है क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है? वो अगर अपना काम वाम भी कर रहा है ना, ब्रेक आती है, तो उसके सारे आसपास के कॉलीग्स आते हैं, चलना चाय ब्रेक पे चलते हैं, मेरे को तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। वाई? बिकॉज काम करके ना दिमाग खराब हो गया, मेरे को रिलैक्स होना है। So I don't wanted to go to anybody like a cribbing friend to spend my 5 minutes of break. I would love to go to the friend who is like a little happy, sorted from head. मुझे पता है कि मैं रिलैक्स होके 5 मिनट के बाद अपने वापस ऑफिस में जाके ऑफिस के टेबल पे जाके बैठूंगा। So this is something जो हम लोग ना knowing और unknowingly कर देते हैं। ठीक है? Yeah. So, do you really want to be happy? Because this is the cost that you might have to pay. ठीक है, लेकिन ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? And how does the happiness looks like? Happiness actually लगती कैसी है? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। I want you all to close your eyes for 5 minutes. 5 मिनट के लिए ना अपनी आंखें बंद करो और एक ऐसा मोमेंट सोचो जो आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा हुआ है कि जहां पे आप सबसे ज्यादा खुश थे, सबसे ज्यादा खुश थे। आंख बंद करके उस मोमेंट को दोबारा रीलिव करो। वहां पे देखो कि आपके आसपास कौन लोग हैं, वो मोमेंट क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, एंड किसी ने कुछ आपसे अच्छा कुछ कहा उस टाइम पे, या कोई एक आई टू आई जेस्चर, या कोई एक नॉन वर्बल जेस्चर हुआ जहां पे आपको यू फेल्ट लाइक it is the best thing that has ever happened to me right now. कोई ऐसी चीज है तो वो मेरे साथ अभी शेयर करो, because I wanted to know. Anybody who wanted to share, go to your memory lane and pick that one major happy moment. It could be anything. For me, it was when I got my kids, when I gave birth to my kids. Same with me, ma'am. हाँ, मैम आप अपना कुछ शेयर कीजिए। I want you to share like how does it feel? How does it look like? When I saw face of my first child, that time I was super happy. Yeah. है ना, उसको देख के बहुत अच्छा लगा। Yes. Yeah. Perfect. Thank you, ma'am, for sharing this. It is a blessing, I would say. Yes, ma'am. It's a miracle. You can't share it. These kids, they will understand it later. But it's amazing. It's one of the beautiful moments that has happened. But I want to understand from you, बच्चा लोग. I wanted to know कि आप लोग के लिए, क्योंकि ना ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। आप में से जो भी शेयर करेगा ना, तो बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज पता है क्या होता है, हम लोग ना सीखते तब हैं जब कोई अपने दिल की बात शेयर करता है, एंड दिस इज अ हैप्पी एंड एन ओपन स्पेस फॉर यू टू शेयर व्हाट इज हैपनिंग। तो व्हाटएवर वाज दैट फर्स्ट या मेजर हैप्पीनेस, मे बी शायद नंबर ज्यादा आ गए होंगे, मम्मा ने बोला होगा कि यार तेरे नहीं आने वाले, तो पढ़ता लिखता तो है नहीं। विवेक बोलो, विवेक प्रजापति। यस, कोई हैप्पी मोमेंट बताओ। हेलो मैम। हाय अजहर। Actually, ma'am, he is a professor. Dr. All right, okay. Hi, sir. No, ma'am. Now I am your student, ma'am. Perfect. Okay. When ma'am, I made my first YouTube video. That time I was happiest moment. That was when I made my first YouTube video. Yes. So that means it was an elite. मतलब I think YouTube पे वीडियो डालना बहुत बड़ी बात है बाबा। मतलब कितना टेक रीटेक, उसके बाद डालू नहीं डालू, and then you still posted it. Amazing. Yes. Brilliant. And that time I worked near about 50 to 20 hours one video, first video. Wow. Yes. Wow. And how many likes do you have right now on that video? Ma'am, 3 months ago, only 2 videos I made because I am very busy. 125 likes only. Oh, wow. Very good. It's big. It's very big. Okay. Brilliant. Thank you for sharing. कोई और है who wanted to share their happy moment?
कुछ तो हुआ Students होगा, is 25 साल की तो लाइफ हुई है ही ना, कितने साल के हो गए सारे के सारे, हाउ मेनी इयर्स आती है? 20 to 23. अरे बहुत होते हैं। कभी कभी किसी को प्रपोज किया होगा, उसने हाँ कर दी होगी, दोज आर लाइक हैप्पी मोमेंट्स। They'll not tell in front of teachers, no? आई नो, हाँ ये तो है, इसके लिए तो फिर अलग से सेशन करना पड़ेगा बच्चों Yes, के yes. साथ। सो Yes. दीज आर लाइक लिटिल लिटिल मोमेंट्स, जब आप किसी को लाइक पहली पहली बार किसी को प्रपोज किया और जिसको करना था, हिम्मत जुटा के यू डिड इट एंड ही और शी सेड यस, वो वाले होते हैं। देन कभी लाइक यू मे बी कुछ एक ऐसी चीज खरीदी जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, बहुत टाइम से यू वांटेड, लाइक समबडी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, माय हस्बैंड लव्स क्रिकेट, तो उसके लिए वो बैट बहुत इंपॉर्टेंट था, ही स्टिल हैज दैट बैट। सो वो छोटी छोटी चीजें, एंड इट कुड बी लाइक मेनी बिग थिंग्स आल्सो, वेयर बहुत सारी चीजें होती हैं घर में, वेयर पेरेंट्स डू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एंड व्हेन यू are able to show that window to them, mama daddy, I will make you proud one day because I'm working hard on my dreams. So those are very very important things, and this is how it feels कि like happiness दिखती क्या है, कैसी है, बिकॉज अभी आपने आंखें बंद करके जो जो चीज फील करी ना, दैट्स हाउ द हैप्पीनेस लुक्स लाइक। ठीक है, अब मैं पूछना चाहती हूँ दैट these are basically normally answers, जैसे you feel peace when you are when you go back to that memory lane, you feel calm when you look back at your happy life, आपको फीलिंग आती है कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड थे जब आपने अपने अपने वो वाले मोमेंट्स को फील किया, जस्ट द वे लाइक सर यू अपलोडेड योर यूट्यूब वीडियो, it gave you that peace, calm and relax, and you were like, you had a smile on your face, yes I did it, those are the faces of happiness. Now if I ask that there is a concept of happiness shopping, हम लोग क्या करते हैं, हम ना कभी कभी अपनी खुशी के लिए ना कभी पिक्चर देखने चले जाते हैं कि चल यार 2-3 घंटे ना थोड़ा माइंड रिलैक्स करके आते हैं, वी पे बाय द पॉपकॉर्न, सिट आराम से रिलैक्स करके, अच्छी सी मूवी चल रही है, बड़े आराम से देखते हैं। तो कभी कभी वो हमारे लिए ना हम वो अपनी खुशियां खरीदते हैं। सिमिलरली यही खुशियां जो होती है ना, कभी कभी होती है जब आप अपना घर खरीदते हो, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी खुशी होती है। जब पहली बार गाड़ी खरीदते हो, वो बहुत खुशी होती है। आज की डेट में आप लोगों के लिए गोवा जाना बहुत बड़ी खुशी है। अगर एक प्लान बन गया ना कि यार 4-5 दोस्त मिलके गोवा चले जाएं, अमेजिंग, ट्रैवल करने में खुशी मिलती है। जब आप अपनी पहली सैलरी लेकर आओगे ना, वो जब आएगा हाथ में, मनी आपके बैंक अकाउंट में, बहुत बड़ी खुशी मिलता है। तो these are like basically happy shopping because you are investing money to buy that happiness, जो आपको बहुत ज्यादा, इट्स अ बिग मोमेंट, बाइंग अ कार इज अ बिग मोमेंट, बाइंग अ हाउस is a big moment, getting married is a big moment, and going for a trip, maybe shayad solo, maybe with friends, maybe like where you never thought that you would do. So those are like moments which you have purchased, or you have worked and collected and went out for your dream. So those are like your happy shopping moments. So if I say that if you see these people, how do you think that they're feeling? इनकी शक्लें देख के कैसा लग रहा है कि ये कैसा फील कर रहे हैं? First one is frustrated. Yeah. second one, third one. I think she's thinking. Yeah. है ना? So their face is looking like जैसे they're in pain or like पता नहीं क्या ही है ना? But now look at it, what they are doing. Now what do you think? Achieve something. Yeah, है ना? They want to excel. They want to achieve. Yes, very right. तो इससे ना एक और चीज समझ में आती है that हम लोग अभी हम लोगों ने हैप्पीनेस को ना फील किया, हमने घर खरीदा, हमने शादी करी या प्रपोजल दिया या फिर मूवी देखने गए, तो दोज वर द फीलिंग्स दैट वी हैड। बट ये वाली जो है ना, ये हमारी शक्ल पे कुछ और ही दिखता है। वी आर इन, दे ऑल ऑफ दीज 3 आर इन पेन,
Like, when anybody who is running or do any physical exercise ना, एक पेन आता है, but वो पेन में भी ना खुशी है. खुशी होती है. There is a happiness of achievement that never mind, I'm going to do this. हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमारा असाइनमेंट नहीं होता, दो रात कभी कभार नहीं सो पाते, खाने पीने का नहीं ध्यान होता. Your friends help you obviously, but we are always like, we are going through that pain because we know by the end of it ना, there is an happiness, एक अचीवमेंट है, एक खुशी है वहां पे. तो अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये जो खुशी है, ये अगर हमारी फीलिंग्स है या फिर हमारा ये दिखना है, तो हैप्पीनेस एक्चुअली में है क्या? Right now na, we are not here to learn about happiness. You know why? Because happiness जो है ना, it is our innate nature, basic nature. Basic nature का मतलब that we are ना born with it. हम लोग पैदा होते हैं इसके साथ. हमें खुशी या हैप्पीनेस को ना ढूंढने की जरूरत है, ना उसको दोबारा से फील करने की जरूरत है. और ये बहुत बड़ी लाइन है जो मैं बोल रही हूँ. हम लोग, सब लोग, every one of us is born with happiness. एक ना बहुत बड़ी चीज है, where we say that you are whole and complete. People might be saying or you might be thinking in your head कि यार ये सबका नहीं है, मतलब कि वो तो पैदा ही खुश होगा इसीलिए वो ऐसा है. But it's not like that. You are born happy. अब इसके लिए ना एक एक्टिविटी करते हैं, बिकॉज ये एक्टिविटी आपको ना हेल्प करेगी. अगर किसी के पास पेन पेपर है, नहीं है, तो आई गिव यू 2-3 minutes to grab a pen paper because you will require. अगर शीट है तो शीट ले लीजिए. Because what I want is, I want you to either draw or cut the A4 sheet into an eye. Create something like this. आप अपनी डायरी के ऊपर भी बना सकते हैं, but the best would be if you can create, एक रजिस्टर से पेपर फाड़ो, उसके अंदर ऊपर से यहां से काटो और नीचे से भी सिमिलरली ऐसे काटो, ताकि आपका ये एक आई बन जाए. जैसे जैसे आई बन जाता है, एक थम्स अप डाल दो. स्माइलीज में है ना दैट थम्स अप, गिव मी दैट थम्स अप. I made it. Oh, perfect. Lovely. Thank you. Thank you, Mr. Ansari. Perfect. Nikhat ne bana liya. I want all of you to make this. Give me as many thumbs up as you can because perfect. Thank you very much. Okay? Lovely. Lovely, lovely, lovely. So now what we are going to do with it? हम ये आई जो है ना, ये आई ना, मेरे पास मेरा आई है, मैम के पास मैम का आई है, और आपके सबके पास आपका आई है. तो ये जो आई है ना, ये आपका मैं है, मैं. ठीक है? तो मैं में हम लोग क्या क्या करेंगे? जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, उसके अंदर हम 5 सेंटेंसेस लिखेंगे, और वो सेंटेंसेस वो होंगे जब हम किसी को, अपने आप को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं. किसी को भी अगर हम लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करें ना, तो वो 5 सेंटेंसेस हम लिखेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा नाम क्या है, मैं एज क्या है, स्टफ लाइक दैट. लाइक हाय, माय नेम इज जसनीत, आई एम दिस 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 दिस. तो वो जो दिस 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 है, उसमें आप क्या क्या लिखेंगे? वो 5 चीजें लिखिए. और जैसे जैसे सब लोग लिख लें, अगेन थम्स अप की बारिश. This activity is very important for you guys. It will open a lot of things.
Yeah. If you've done, give me a thumbs up, just 5 sentences. Thank you. Perfect, perfect, perfect. Oh, lovely. ठीक है. Let's see what you have written. Share anybody who has written. तो वो एक बारी ना पढ़ के सुना दे कि मैंने ये लिखा है. Like supposedly, if I also write it, I have written. My name is Jasmeet. I am 40 years old. I am a mother of two. I'm a working professional, and I love to walk in the garden. These are my 5 things that I've written. Ma'am, do you want it to share? Yes, ma'am, I can. First of all, my name is Yeah. Shalini. I am a working professional, Yeah. mother of two. I want to make friends as many as I can, and I love my work, and I'm always confident with whatever I do. Oh, perfect. Very nice. Very nice. This is a very good introduction. Thank you, ma'am. Anybody else? Thank you. कोई और share करे please? Yes, anyone? Pooja Komalkar, do you want it to share? I'm just picking few names. Yeah, ma'am. One of our senior teacher has joined. Praveen Handa, ma'am. All right. Yeah, she is our English teacher. All right. Hi, Praveen ma'am. So anybody else? I want the kids also to mention. Yes, anyone. Bhuvi, do you want it to share? Pooja, you can also share. Hi, Anaya. Ananya. Yes, Pooja, you can share. Unmute, unmute. Yeah. We are not able to hear. I think it's a network issue. I'm not. Yeah. Yeah. No. Pooja, you are not audible. No, you are not audible. Yeah. I can't hear. Actually, your voice is getting static. वो ना बार बार कट कट के आ रही है. It's a network issue, I think so. Try with your video off. Maybe शायद वीडियो की वजह से भी होता है. In the meanwhile, कोई और try करना चाहता है? Praveen Handa ma'am wanted to say something. Yes, ma'am. Okay. Good evening, ma'am. Praveen ma'am. Good evening. Good evening. Can you Hi. hear me? Yes, Yeah. yes, we can hear you now. I'm so sorry I have joined the meet late because I'm not here. I'm out of station. And Okay. so Perfect. Even I'm also in Vrindavan. I have just come here. So yeah. during the meet and Yeah. I've just started listening to everyone. Yeah. Perfect. So, ma'am, what we are doing right now is we are doing a eye activity. So where Right. I've requested everyone to create this eye where Okay. everybody will be having their own eyes. So I have my eye, ma'am has her eye, and everyone has got their own eye. Eyes. So eye में जो first step है ना, जो first part of the eye is going to hold 5 sentences where you will write these 5 sentences in a way that you are introducing yourself to someone who you're meeting for the first time. Okay. So that's what we need to write. Like, for example, how I've written is that, my name is Jasmeet. I'm a 40-year-old, mother of two, working professional. And something that I really like is that I love to walk in the garden. Yeah. So can I introduce myself without an Yes, eye? please. Yes, please. Why not? Okay. I'm Praveen Handa.
and I have retired from college, but I consider myself to be a working professional still. I Okay. keep myself busy in many things, including educational activities. And Yeah. besides that, my interests are I enjoy cooking, working in my kitchen, and also enjoy working in my garden Lovely. and interacting with kids a lot. I love that. Lovely. Thank you for sharing, ma'am. Thank Thanks. you. Thank you. Thank you. So let's move to the second section then. You know, kids, if Right. supposedly, I just you might not wanted to share, but I want you to write. Don't worry about sharing because maybe there must be many things that you must be thinking about it. कि बोलूं नहीं बोलूं, मैम्स हैं, teachers हैं, but let's just have this as do write, ठीक है? So उस चीज के लिए give me a thumbs up because Okay. participation, if supposedly you are not giving and sharing, most important is what you are writing. Okay. Sure. Okay? Yeah. So students, you are going to write this, and first will be 5 sentences of how you're going to introduce yourself to the someone who you're meeting for the first time. So we have understood with the examples, right? Now comes the middle part. ये जो middle part है ना of our I is going to have 5 sentences or words also, which will talk about your strengths. आपके अंदर की strength क्या है? तो वो आप लिखोगे. लाइक मैंने जो लिखा है वो लिखा है कि आई एम रेजिलियंट, आई एम हम्बल, आई एम स्मार्ट, आई एम क्यूरियस लर्नर, आई एम अ वेरी क्यूरियस लर्नर, एंड आई एम compassionate. So these are like 5 strengths that I have written, which I feel very proud of these as my strengths. ये मेरी 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 ताकत है. ये या तो आपने लर्न कर रखी होती है या ये आपकी बिल्ट इन होती है. मतलब यू आर born with few things which you have. Like somebody must be an artist, somebody must be a communicator, somebody is passionate. So वैसे से आप कुछ जो भी आपको लिखना है ना, जो स्ट्रेंथ्स हैं, आप वो लिखो. किसी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है. And once you have written, give me a thumbs up. I will not ask you to say it, but give me a thumbs up if you have written. Thank you. Thank you, Fatima. Aman Ansari, thank you. Asna, thank you. Ahura, thank you. Nikhat, thanks. Thank you. Lovely. Lovely, lovely. This is beautiful. Thank you, bachcha log. Thank you very much. Thank you for writing. Okay. Now for you to understand, we as in the teachers and myself, we'll share and you learn from it. Okay, na? So ma'am, do you wanted to share what you have written as your 5 strengths? Ma'am, me or Handa ma'am? हांडा मैम, आप तो म्यूट पर हो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Ma'am, meanwhile, I'll read. Okay. Oh my God. Can you hear me, Handa ma'am? Okay, because Yes, I can hear you. yeah, okay, ma'am, you got stuck. So yeah, Yeah, share. yeah. Now, now You're okay now. there was an Yeah, interruption in the network. Yeah, now it's okay. Hanji. Yes, ma'am. Okay, yeah. So ma'am, share your 5 strengths.
Me, ma'am? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. I respect time. I'm a lifelong learner, and I feel that I learn till my end. So I like to explore the things through learning. Then I love to Okay. help Very nice. others, my friends and family, and everyone whom I meet. I love my profession. I'm a strong woman. I say this because I raise a intellectually disabled child. So these are my strength. I feel so. All right. Good. Very strong woman, huh? It's a proud moment. It's a very good thing. Thank you, ma'am, for sharing. Thank you. Thank you. Handa, ma'am, do you wanted to share your five strengths? Okay, I'll share my strengths. And I too believe I'm a very strong woman, and I have the strength to overcome whatever life has been good to me, but everyone has ups and downs. Yeah. And I have the strength to overcome them. Yeah. That is my strength. And I'm basically quite adjusting by nature and don't lose my temper easily. Yes. That I consider as my That's That's great. strength. lovely. Mostly I get along with people quite well. Okay, very good. That is also my strength. That's And of very nice. course, I too believe that I'm a lifelong learner. And the more Hmm. you interact with people, you learn something or the other practically from everyone. Yeah. Yes. Yes. Yeah. That is something which we keep on day-to-day basis. Yes. That's That is very my true, strength. ma'am. Very true. Very true. Thank you so very much for sharing this. This is a big thing because we sometimes now we do not know our strength. So if supposedly any one of you were only able to write two or three, ये वाला ना एक ऐसी चीज है जो जिसको आपको ना छुपाने की जरूरत है ना कुछ है बट यू जस्ट राइट even if you feel that you have it, you just write it. ठीक है? Now comes the very important and a very hard part, which is the last part. ये जो लास्ट पार्ट है ना हमारी आय का, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम अपनी वीकनेस लिखेंगे. These are going to be our weaknesses, something which we are not very proud of, something which maybe like बहुत सुना है हमने बाहर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स फैमिली से, अपने पड़ोसियों से. तो ये वो चीज़ है जो जो आपको ना आपने आपने सुनी है बिकॉज या फील करते हो. और ये चीज़ आपकी आपकी वीकनेस है. So it could be five, it could be one, it could be two, three, four, it could be 12 also. You know, just share that. And similarly, अगर आपने कर दिया है, तो everyone just give me a thumbs up. Done, done, done. Very good. Thank you. Thank you, Afifa. Thank you, Ananya. Thank you, Riz, Mansi, Prachi, Afsan. Great job. You kids, you're good. Thank you. So अब हम लोगों ने हमारी weaknesses लिख दिया हैं. Now the time comes for sharing. और इसके अंदर ना शेयरिंग के अंदर हम क्या करेंगे, कभी कभार ना वीकनेसेस हम लोग ने जो लिखी हुई है वो हम लोग सब एक 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 करके शेयर करेंगे. और अगर वो वीकनेस दूसरे की नहीं है,
लाइक वट एवर वीकनेस आई एम गोइंग टू शेयर, अगर वो किसी और की नहीं है ना, तो आप में से कोई भी थम्स अप नहीं करेगा। और अगर वो वीकनेस आपकी भी है, दैट मीन्स आई शेयर दैट वीकनेस विद यू, यू आर गोइंग टू गिव मी अ थम्स अप, राइट? सो इन माई I have written, I am lazy and I am a procrastinator. Oh my God. तो मतलब कि वो एक क्राउन जो चाहिए था ना मुझे कि मैं ही लेजी हूँ, क्योंकि मेरे को तो घर में सारे बोलते हैं कि तू बस मतलब कि बैठी रहती है, यू डोंट डू मच। सो वो मेरे से चला गया, ठीक है। और मैं प्रोक्रेस्टिनेटर भी हूँ समटाइम्स, लाइक आई डू थिंग्स राइट एट द लास्ट, सो आई एम वर्किंग ऑन इट, बट या। एंड और मैं ये भी चीज थी, लाइक आई एम लविंग इट दैट दिस इज बेसिकली अ 2 year old write up that I have written for my eye, and I feel that I'll share with you later about this. I've also written that I somehow can't finish my work. मैं कंप्लीट ही नहीं होता मुझसे मेरा काम पूरा। तो ऐसा कोई है जो जिसका सच्ची में काम भी नहीं पूरा होता, करने की कोशिश करते लेकिन पता नहीं क्यों कुछ हो जाता है। ओह थैंक्स। So there you go. So we have people, we have this thing जिसमें हम लोग, मैं शेयर कर रही हूँ अपनी weaknesses with someone. So that means मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं हूँ, right? So Dr. Shalini, do you wanted to share your weaknesses and let's see if we all share the same with Ma'am, you. I have very little patience. I cannot be patient all the time. Oh, there you go. There you go. Simran also. There are many of us who are very impatient. So there no crown is going to go to you. Anything else you've written? Yes. I cannot adjust to with manipulative people. Oh, very good. Anybody else? There you go. We have people. I'm also giving you a thumbs up. Thank you, ma'am. I'm also the same. So here also no crown is going to you. मुझे एक ऐसा बच्चा मेरे को ये बता दो या तो चैट में लिख दो where I can see कि हाँ भी ये weakness जो है ना ये सिर्फ आपकी है, because इतने लोग बोलते हैं, मतलब सब लोग यही बोलते रहते हैं, तो had to be something ना जो आपको you feel really proud कि हाँ भी ये मैं ही हूँ। तो हांडा मैम, do you wanted to share your weaknesses? Ma'am, please unmute yourself. Okay, sure. One is I agree with Shalini. I too am a very big procrastinator. I delay everything till the last minute. Nowadays, like again, that is my weakness. For a long time, I've stopped writing. Earlier, when I used to write very regularly, I would get the deadlines from the editors that by this date we want your article to be sent, this to be sent for publication. And I would literally wait till the last day to start writing, and only then I would write and post it. So I'm a real big procrastinator. Yeah. I delay everything till the last minute. To the last minute, na? I'm the same. And then I think I'm a big spendthrift. Oh. Oh, I spend money without thinking about tomorrow. That is my I big need to be your friend. and I've not been able to cure it even now. Wow. Madam, it That's gives good. pleasure in spending, in shopping. It gives pleasure. Yes, Me yes, too. है Go ना? for shopping. I'm a shopaholic. Yeah. Me too, ma'am. Yeah. So there is Jaffrey Gulshan who says that syllabus कितना भी complete करने की कोशिश करूं वो पूरा ही नहीं होता. This is my weakness only before my exam. Baby, हमारे साथ भी यही हुआ था. So yeah. And Asna, you mentioned my weakness is that I always get agreed to do other work every time. I know. This is, you are a very compassionate girl. Yeah, Like you must be very, yeah. So होता क्या है कि because ये cost है happiness की, and I would say that इसको पकड़ के रखो. But then ये cost है because you're so welcoming and you're so compassionate that you do not have any biasness. आपके पास बायसनेस नहीं है, इसीलिए जो भी आपसे काम कर बोलता है ना वो आप कर देते हो, पर उसके बाद क्या होता है आपको खुद के काम के लिए टाइम नहीं मिलता. तो ये होता है. So that's there. But yeah, it is a weakness. Yes, you can't say no. So here what we have learned in this is
दैट हमारे पास ना हमको दीज आर द थिंग्स जो कहीं ना दे हैव एक्चुअली लेट अस डाउन ऑल्सो wherever like sometimes बोलते हैं यार तू मतलब कि काम पे नहीं कर सकती you could have done this before also ना you had the entire time of the time in the world you should have planned properly and अगर आप lazy होते हो you say कि यार सारा टाइम ही lazy रहती है सारा टाइम कुछ कुछ करती रहती है if you do not mingle up too much with people then you are very shy or you don't know how to be social society के अंदर you don't know how to create a network. So those are the things जो हम लोग को we have to go through them. But now I wanted to say so where did it all started is my question. ये हमने words use करे I'm lazy, I'm procrastinator, I can't do my work properly. कुछ भी कर लो एग्जाम से पहले मेरा सिलेबस ही नहीं पूरा होता है या आई कांट से नो. ये सारी चीजें ये जो हमारे को दी गई हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुई हैं? दिस एवरीथिंग ना इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. जब हम पैदा होते हैं द डे वी आर बॉर्न हम लोगों को टैग्स दिए जाते हैं. Lazy is a tag. Procrastinator is a tag. You can't mingle up with others is a tag. You can't complete your stuff is a tag. You this, that, you girl, you boy, etc. is all tag. So think about it, that when you are born, आपके पैदा होते ही आपको पहला टैग क्या दिया जाता है? Whatever weaknesses our parents see. Yeah. हम सबसे पहले ना कभी कभार ना ये वीकनेसेस या इवन ये जो आई है ना ये पूरा आई दीज आर आवर वीकनेस टैग्स, दीज आर आवर स्ट्रेंथ टैग्स. ये सारे के सारे जो है ना ये सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड है बिकॉज वी कैन बूस्ट अबाउट इट. बट ये भी सब हमारे को मेहनत करके अर्न करें या फिर शायद थे ही अपने पास. दिस इज ऑल्सो लाइक समथिंग जो आई का टॉप पार्ट है वो भी हमारा टैग है. Like my name is a tag, my gender is a tag, my age is a tag, my profession is a tag, my being a mother of two is also a tag. Because if somebody else of my age is not a mother, then she also has another tag. Yeah. So everything where all it started when you were born. Because जैसे ही आप पैदा होते हो ना सबसे पहला टैग क्या दिया जाता है आपको? That you're a boy or you're a girl. Yes. Like मुबारक हो लड़का हुआ है या मुबारक हो लक्ष्मी आई है. So वो पहला टैग मिलता है आपको. Nobody says it's a baby. वो पहला टैग. उसके बाद आपको जब सीधा लेके जाया जाता है अपने रिश्तेदारों से मिलाने के लिए तो एक कुछ ना फॉर्म फिल किया जाता है. लाइक मदर का नाम, फादर का नाम, आपका रिलीजन. तो वो सीधा दूसरा टैग कौन सा है? रिलीजन. तीसरा टैग्स क्या आते हैं? अब आपके सोसाइटल टैग्स आएंगे. जैसे ही आपकी नानी दादी कोई देखेगी आपको सबसे पहले तो दे वुड से बहुत प्यारा है डैडी पे गया है या बहुत प्यारा है मम्मी पे गई है. तो दीज टैग्स कि आप किस पे जाते हो. रंग थोड़ा काला है या रंग थोड़ा पक्का है. दोज आर ऑल्सो अ टैग. Tags, yes, ma'am. दीज आर टैग्स. एंड वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है स्कूल जाता है देर आर सर्टन अदर टैग्स. ये लोगों के साथ मिलता नहीं है, ये लड़कियों के साथ बात नहीं करता या ये अपनी चीजें नहीं शेयर करता. देर वॉज अ बुक दैट शी कुड हैव शेयर्ड इट with her next friend who is sitting next to her, but she don't share. Another tag कि आपके पास बोल दिया जाता है. सो सिमिलरली थोड़ा सा आप बड़े होते हो, कभी आप मोटे हो जाते हो, कभी आप पतले हो जाते हो, कभी पिंपल्स आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी होता है कि अरे तेरी हैंडराइटिंग कितनी गंदी है. छोटी छोटी चीजें जो है ना, तुम दाल सब्जी नहीं खाती, तुम्हारे को ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं अच्छे लगते, वो जो हल्की हल्की छोटी छोटी चीजें होती है ना, दे बिकम अ टैग टू यू एंड दे आर वेरी वेरी बर्डनफुल. बहुत ज्यादा हमारे ना हम लोग उसको लेके चलते हैं कभी कभी. अभी तो लाइक कभी कभार एग्जाम्स में नंबर नहीं आते,
कोई एक सब्जेक्ट होता है जो पल्ले नहीं पड़ता, और वो भी हम लोगों को बोला जाता है कि ये नहीं आता तुझे, मतलब कि इतना सारा टाइम तो है, कर तो ले, खत्म तो कर ले। उसी की वजह से हम लोग लेजी हो जाते हैं, हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज अ टैग। ये हमारे को एक टैग दिया जाता है। कुछ टैग्स हमारे हम खुद लेकर आते हैं, लाइक बीइंग अ बॉय और आवर कलर, और द रिलीजन इज आल्सो गिवन बाय द सोसाइटी। बाकी सब सोसाइटल है, सारा का सारा सोसाइटी से आया है। या तो वो आपको जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तब वो वाले टैग्स आप यूज करते हो, या जो आपकी स्किल्स है जो आप अर्न करते हो विच इज गोइंग टू गिव यू दैट स्टेटस, सोसाइटी में एक स्टेटस है, उसका टैग यूज करते हो। या वो ऐसे टैग्स हैं जो आप मे भी शायद किसी से शेयर नहीं करते, जो नीचे वाले हैं, जिनको आप स्ट्रगल करते हो। बहुत सारे टैग्स तो हम लोगों ने शेयर ही नहीं करे हैं, Yes. बहुत सारे होते हैं जो हम लोग शेयर ही नहीं करते। सो ये सारे टैग्स अगर आप लेके अभी तक चल रहे हो, 21 ईयर्स हो चुके हैं, हम 40 अबव हो चुके हैं, हम अभी तक लेके चल रहे हैं, तो थिंक अबाउट इट, हाउ बर्डन वी आर और वी मस्ट बी फीलिंग। अब इसको एक और चीज से समझते हैं। सब लोग लैपटॉप्स यूज करते हैं। हमारा लैपटॉप के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और बहुत सब कुछ, मतलब कि फोटोग्राफ भी है, हम लोगों ने वीडियोस भी डाली हुई हैं, हमने सब कुछ डाल रखा है उसके ऊपर, और वो हैंग करता है, बाद में जाके हैंग ही करेगा। तो हैंग करने पे अगर हमें उसको थोड़ा सा ठीक करना है, तो हम क्या करते हैं, लैपटॉप को वो भरा हुआ है, उसके पास जितने भी, उसका वर्ड भी चल रहा है, एक्सेल भी चल रहा है, क्रोम भी चल रहा है, उसका एज भी चल रहा है, उसमें यूट्यूब भी चला रखा है, उसके अंदर आपने काफी सारी वीडियो गेम्स भी डाली हुई है, और एक तरफ पे आपका एक परफेक्ट फोल्डर है जिसके अंदर फोटोग्राफ्स भी हैं। सो व्हाट विल हैपन टू दैट लैपटॉप, इट विल हैंग, विल इट नॉट? उसको शट डाउन नहीं कर रहे हो। अगर हम लोग शट डाउन भी ना करें, छोटी सी चीज है, शट डाउन ना करें, क्या होगा? नेक्स्ट टाइम आप खोलोगे, आपकी एक्सेल एक्सेल रुकेगी, आपकी पीपीटी नहीं बनेगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इन सारी चीजों को अगर हमें कुछ रिजॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक 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 करके उन सारी एप्लीकेशंस को क्लोज करते हैं। वी क्लोज एवरीथिंग। कभी कभार तो हम लोग उन चीजों को डिलीट भी कर देते जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बट बहुत सारी स्पेस ले रखी है, मे बी शायद, लेकिन वन ऑफ द मूवी विच you now don't want to do, you watch it, but it is taking space. So what you will do, you will delete that, so that your computer has some space for some more software to come, or some more video games to be downloaded or something else. तो हमारी ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, क्योंकि ये क्लीनिंग प्रोसेस आता है, ठीक है। बट हैव वी एवर थॉट दैट, हैव वी एवर डन दिस टू आवर लाइफ्स? हमने कभी अपने लिए करा है ये चीज? हमारे पे तो कितनी सारी टैग्स खुले हुए हैं हमारे पूरे। अगर हम लोग एक एक आईफोन या फिर एक मोबाइल फोन है, एक स्मार्टफोन है, तो हमारे में तो बहुत सारे टैग्स खुले हुए हैं। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप भी खुला हुआ है, हमारा इंटरनेट भी खुला हुआ है, हमारी कितनी सारी, हमारी यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सारी चीजें खुली हुई हैं। सो हाउ अबाउट it if we either close these apps, or if these apps are not required, we delete them from our life? Would we not feel comfortable and a little light? Yes. है ना? अब इस पे ना, let me just do one small little meditation, because this will help you in understanding that what these could be. So before we start with this meditation, आप ना अपनी लाइफ के वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि यार दे आर रियली बर्डनिंग मी आउट, इट कुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग, एग्जाम्स की टेंशन, इट कुड बी एनीथिंग, उन सारी चीजों को आप सोचो, एंड लेट्स डू दिस एक्टिविटी। मैम, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू हियर। Yes, ma'am. You're audible and visible. Yeah. हाँ जी। But the PPT is not visible now. You're not sharing? हाँ जी, हाँ जी। No, no. What I will do is, I will just play this app, the video from here. There's an audio which I will play. Yeah.
I would now like to invite you all for a few minutes of meditation. Begin settling into a comfortable position, either on a chair or on a cushion, and close your eyes. Take a long, deep breath in and slowly exhale. Feel any tension melting away as you gradually relax deeper with each breath. Take another long, deep breath in and exhale. Feel yourself drifting into a state of deep relaxation and slowing down. Expand your awareness beyond your breath to now include your entire body and let all your muscles relax. With this relaxed state, let us focus today to recharge your battery. Imagine a phone that is running very low on memory. It has many apps that are open all at the same time, causing it to slow down and get very slow in performance. You start to close each and every app by sliding your finger from bottom to top. With each slide of your finger, one app is closing, one by one. You close all the apps. Now shift your focus to your inner self. Imagine all the apps that are constantly running in your memory. You have apps like your name, gender, age, qualification, relationship status, parent, spouse, profession, and so on. With every inhalation, say in your head, I have a name, but I'm not my name. And with exhale, slide your finger from bottom to top and say this in your head, I close this app. With every inhalation, say in your head, I have my gender, but I am not that. With exhale, move your finger to close this app. I am not my age. I close this app and continue to slide your finger to close every app. I have a religion, but I am not that. I close this app. I am not my profession.
I close this app. I am not my relationship status. I close this app. अरे येऊ दे तिला. I am not my role that I play. I close this app. There are apps like your labels, such as your qualities and weaknesses. You are closing them as well because you have them, but you are not them. Close them one by one. Every time you are closing your app, you are feeling a deep sense of relaxation, peace, and calmness in your whole body. Take the next few seconds to close everything that's coming to your mind. Close the app of conflicts. Close the app of your fears, worries, and insecurities. Close the app of what will happen tomorrow. Close the app of your unresolved emotions. Close every app that's coming to your mind now. Keep sliding your finger and say, I close it. I close it. I close it. You are feeling deeply relaxed and restful in your body, mind, and emotions. All these labels that you carry in your day-to-day, they were draining your power, are now closed. You are at a restful state. With every inhalation, you are creating more and more space. And with every exhalation, you are being your whole self. Each and every cell in your body is filling with joy and blissfulness. Continue to be in this state for the next few minutes.
Whenever you're ready, you can open your eyes. How is everyone feeling right now? After closing all the apps, everything that has been bothering or has been putting a burden, give me a heart if you are able to feel a little relaxed and free. Yeah, it is. Sometimes we need to we need to give a pause to our life, how it is going, because this helps in either closing what we are, continuously doing, or it helps us to delete it also. Sometimes we don't need to do this. I'm going to share something very important. Now, when I share this very small video, I want you to, watch it as if your life depends on it. Because what's happening is that we are looking maybe at happiness from a human mind, which is very complex. It asks a lot of questions, like कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा, क्यों नहीं होगा. So though we know that the happiness is our basic nature, and it is there from the very first day that we were born. However, it gets complex the moment we start growing up. So let's understand that what it is from a very simplicity format, which I'm going to share it with you. So when you watch this video, I want you, number one, to watch this video with a complete presence. Just be there with nobody disturbing you, but just watch it. And don't have any expectations. When you're watching it, that don't have any expectation, but watch it as if your life depends on it. And try to experience the video without getting involved in appreciating the video, or having any thoughts about the video, but just be involved in this video that I'm going to share it with you. Give me 2 minutes. Can you hear the voice? Yes, ma'am. You were able to hear the voice also? No, ma'am. Video, The watching the music? video is not audible. Okay.
What do you think happiness was for this flower? We've seen this beautiful video of how the flower was growing. What do you think happiness is for this flower? To bloom. Anyone wants to share? जब हम लोग ये वीडियो देख रहे थे इस फूल के लिए क्या खुशी थी? कोई भी कुछ बताना चाहेगा? You can chat also. You can put it on the chat box as well. जब हमने ये वीडियो देखी तो हमें क्या लगा ये इस फूल के लिए this what could be the happiness for this flower, because this was a very simplistic way of happiness to blossom. Yeah, this flower was, when we were watching it, it was just there because we were able to see one petal after the another growing. It was blossoming. And the moment one flower was blossomed, there were another few buds which were also coming out. And then there was another one at the back as well. So, it was blossoming. But who or what helped in blooming? ब्लॉसमिंग के लिए या फिर किसी भी प्लांट को खिलने के लिए क्या चीजें हेल्प करती हैं? एक हमारे नॉर्मल साइंस में एग्जैक्टली एनवायरनमेंट में सनलाइट आता है, वाटर आता है, सॉइल आता है. एंड व्हाट इज आवर रोल इन द ब्लॉसम? हमारा कोई रोल था उसकी ब्लॉसमिंग में? Yes, to nurture. सपोजली है तो हमारा क्या रोल था इसकी ब्लॉसमिंग में? Yes, ma'am. To nurture the plant, to give whatever is needed, like watering the plant and giving Yeah. the right amount of nutrients required and all. Yes, correct, ma'am. Ma'am, because हम लोग ना, we can only provide the environment or facilitate the process, but but the blossoming happens on its own. Yeah. हम लोग सिर्फ उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं. हम उसको पानी दे सकते हैं टाइम पे, हम उसको सनलाइट में रख सकते हैं, हम खाद दे सकते हैं, अच्छी अच्छी सॉइल में डाल सकते हैं. दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू. बट जो उसका ब्लॉसमिंग है ना, जो उसका खिलना है, वो तो उसका खुद का है. जस्ट like the flower, as in the way a rose flower was blossoming, similarly a lotus flower will also blossom. Similarly गेंदे का फूल भी वैसे ही खिलेगा, blossom होगा वो भी. So here my all intention to tell you is that we are also going to blossom, because that is what we are supposed to do. And चाहे आप चाहो या ना चाहो, हम लोग blossom करेंगे और कर रहे हैं. The only thing that we need to provide us is the environment. और इस environment में a rose flower will not like to blossom like a lotus flower, and a lotus flower will not like to blossom like a genda ka phool. So what we also need to understand is that I am going to blossom because I was also where you are right now. स्टडीज सब कुछ बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, कभी दिमाग में नहीं आता था. बट देन एक चीज़ जो दिमाग में हमेशा से सेट थी ना, वो ये थी कि कुछ तो अच्छा होगा. बिकॉज इफ आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड,
मैं पैदा हुई हूँ, मेरे को मैं आई एम गोइंग टू ब्लॉसम वन डे. How I'm going to blossom that I did not know. Yes, during the journey, I started getting a little inspired, or you can say even jealous also, with the blossoming of some other flower or some other person. Because कुछ flowers होते हैं बहुत जल्दी blossom हो जाते हैं और कुछ को time लगता है, लेकिन blossom होता है. तो we need to focus only and only on ourselves providing that environment that we need to blossom. It could be that currently we are not getting that environment. Maybe we are maybe we are thinking that our society needs to provide it to us. नहीं मिलेगा. If we are not getting that support from outside, we need to support ourselves so that we blossom the way we want it to. Not because वो सामने वाला जो है ना वो तुम्हारी एज का है लेकिन वो कुछ और तुमसे ज्यादा कर चुका है. That is his blossoming cycle. And my blossoming cycle is my blossoming cycle. So that is what we need to understand. एक और चीज if I ask, you know, yeah, ये एक प्लाटर है. सपोजिटली आपके पास ये सारा खाना जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, टाइम भी हो गया, बहुत अच्छा टाइम पे ये क्वेश्चन आ रहा है. ये खाना आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, और अब आपको इसको खाना है. नाउ देयर आर गोइंग टू बी वन सिचुएशन दैट आई एम गिविंग टू यू. एक सिचुएशन है कि आप ये खाना खाओ thinking, considering yourself that you have not eaten anything for 5 days. 5 दिन से भूखे हो, ये खाना आपके सामने आया है, इसको आप कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? 5 दिन का भूखा इंसान इसको कैसे खाना खाएगा? कोई ऑर्डर नहीं रहेगा मैम, उसको बस पेट भरना है ना. विल जस्ट गो ऐसे प्रॉपर्ली दे दो कुछ भी. वी विल नॉट इवन थिंक अबाउट कि स्पून लेना है कि नहीं लेना है. वहां पेट में डालो इसको बिकॉज आई एम हंग्री, राइट? तो एक वे है ऐसे खाना. दूसरा सिनारियो है यही खाना है और इस टाइम पे आप जो हो ना एक फूड क्रिटिक हो. फूड क्रिटिक को समझो कि जैसे फूड क्रिटिक होते हैं जो खाने को टेस्ट करके बताता है और रेटिंग देता है, वो वाले हो. तो जब आप इस खाने को देखोगे तो आप कैसे देखोगे इस खाने को? आपको ये वाला खाना मिला है एंड यू आर अ फूड क्रिटिक. हाउ आर यू गोइंग टू टेस्ट दिस फूड नाउ? हाउ आर यू गोइंग टू ईट इट? with many questions in mind, like the quality of food, then the form of food, in what way it is prepared, like then the whether it is spicy or it's suiting the needs of my needs. Then liking. Yes. Whatever. Yeah. So that means this guy, if I am a food critic, I'm going to be very analytic about this food. Yeah. मैं सबसे पहले देखूंगी सिमिलरली लाइक हाइजीनिकली प्लेस्ड है, डिस्प्ले कैसा है. सबसे पहले तो मेरी आंखें खाएंगी उसको. मेरी आंखों को अच्छा लगेगा तो मैं छुरी कांटा लूंगी और एक छोटा सा पीस काटूंगी. उसके बाद उसको मैं मुंह में घुसाऊंगी. उसके बाद फिर मैं इसको पूरा टेक्सचर भी मुझे एनालाइज करना है. तो मेरे को भूख नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू सी हाउ इट इज टिकिंग माय एंटायर बॉक्सेस ऑफ एनालाइजिंग so that I can rate this food. ठीक, तो मतलब ये जो खाना है ना मेरे सामने, ये खाना मेरी भूख मिटाने के लिए नहीं है. ये खाना मैंने काटा, खाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि मुझे इसको एनालाइज कैसे करना है, इसको मेरे को रेटिंग देनी है. अब यहीं पर ही यही खाना आपके किसी लव्ड वन ने बनाया है. थर्ड सिनारियो, आपके किसी लव्ड वन ने बनाया है. इट कुड बी योर मदर हु हैज प्रिपेयर्ड दिस फूड.
It could be your grandmother who has prepared this food. It could be your husband, your wife, or your friend who has prepared this food on your birthday. How are you going to eat this food now? आपकी जब मम्मा खाना बनाती है और इतना सुंदर लुकिंग खाना बनाया, तो हमारा हम इसको कैसे खाएंगे? हम इसको प्यार से खाएंगे क्योंकि हमारे किसी अपने ने बनाया है इसे, है ना? सो यही चीज है द क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन। ये जो ब्लॉसमिंग और हैप्पीनेस की अभी हम लोगों ने पूरा टाइम बात करी है ना, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन। दैट किस इंटेंशन से और किस क्वालिटी के साथ आप ये खाना खा रहे हो ना, उसी क्वालिटी के साथ आपको अपनी लाइफ को भी देखना है और उसकी खुशियों को देखना है। सो यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हमारी ना लाइफ के अंदर बहुत सारी हैप्पीनेस को देखने के लिए ये तो समझ में आ गया दैट यू नो इट इज वी कांट फाइंड इट फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज इट इज ऑलरेडी हियर। वी आर बॉर्न विद इट। जब भी कभी कोई बच्चा होता है उसको हम लोग बोलते नहीं है जाओ, लाइक यू नो वी ऑलवेज ब्लेस द चाइल्ड, यू नो व्हाट अ स्वीट चाइल्ड, वी नेवर से दैट यू क्या पैदा कर दिया, है ना? तो हम लोग को पता है वी आर बॉर्न हैप्पी। अब ये तो समझ में आ गया। हमें ये भी पता है कि हमारी अब जो ब्लॉसमिंग है, द वे वी आर ग्रोइंग अप इज ऑल्सो गोइंग टू बी यू नो एट आवर ओन पेस, एंड वी आर गोइंग टू ब्लॉसम जस्ट द वे वी आर सपोज टू ब्लॉसम। I am not going to blossom like Dr. Shalini. And Shalini ma'am is not going to blossom like me. We have our own journey because, and it all depends how we are providing the environment for us. So with this thought, this is the closure of our session. So I wanted to thank you all for being a part of this. And इस टॉपिक के ऊपर ना मैम आई विल बी शेयरिंग 7 days के एक्टिविटीज, एंड दीज एक्टिविटीज यू डोंट हैव टू डू और लाइक इन पेन पेपर लेके नहीं करनी है। ये वाली एक्टिविटीज को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना है फॉर दैट पर्टिकुलर डे, एंड उसके बाद आपको ये देखना है कि you know by the end of that day when you had that particular activity in your head for the entire day, because I'll share it first thing in the morning, so you will do that activity, and by the end of it na I would like to know that you know what was your learnings from it. You can share it also. So ma'am, I'll speak with you how we can go about this the sharing of the activity and the sharing of the feedback. These activities will definitely help you in understanding how you can bring and see happiness in your daily life. Because हमें ढूंढना नहीं है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बार बार मिलती नहीं happiness because we have that within us. So how we can enlighten it, जो शायद हम लोग भूल गए थे कि हमें हमारे अंदर है, तो उसको हम जगाएंगे इन 7 दिनों में। ठीक है, and that is it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you, Pooja. Thank you very much. Okay, ma'am. Yes, Simran. Thanks, ma'am, for your Yes, ma'am. valuable guidance. If anyone having questions related to this topic, you can ask here. Yes, please. किसी को कोई भी क्वेश्चन है, let me know. I would love to answer with my own capacity. Okay, if you don't have any questions, then we'll proceed. Yes, Simran. Sure. Now, I invite Vaibhavi Saire, student of BSc third year,